Okay, once again, good morning, everyone. I hope you can hear me, right? Now, actually, we are doing revision and we are in the second chapter. In previous lecture, I think on Tuesday, we had discussed till this session components, and I told you that there is a topic known as geometry of hexagon and frequency reuse derivation. Well, this is uh, this is a topic like it is very important and it will come in your exam as well. But I will cover it up, no issue. Uh, but right now I do not have that pen, so I'll cover this up. Do not worry. Okay, so the next topic in this chapter only we have channel assignment strategy. So there are 3 or 4 topics inside this chapter, and all 4 topics maybe come up in your 6 marks question. So what is the first question? First question is like, what do you understand by cellular system? What are the advantages and disadvantages, right? Then there might be a chance that you get a question about what are the different cellular system components. So you will write 6 components here. There might be a chance that you get a question of geometry of a hexagon and derive the frequency reuse equations. Okay. And there is a question called as channel assignment strategies. So let's cover this up, channel assignment strategies. Uh, the meaning of channel assignment strategy is after getting the radio band, we have different channels and channels have different number of frequencies. So we have to assign these channels to the users, like in a very precise manner. I cannot allocate any channel to any user or any bundle of user or organization. I need to precisely give it. So there are 3 conditions. There are 3 what you can say followings where you can distribute or allocate these channel to the user. So one is a fixed channel assignment, another one is a dynamic channel assignment, and another one is a handoff assignment. Now, what do you mean by fixed channel assignment? It is like the the channels which are coming from some organization, just like TRAI, which gives you the channel, they are pre-allocated to the different cell. So let's say I have 3 number of cells, cell 1, cell 2, cell 3. Then these 3 cell have pre-allocated, I mean a fixed channel they have. So maybe 50 kilohertz band, a complete band of 50 kilohertz, maybe a 40 kilohertz complete band, or maybe 60 kilohertz complete band. Likewise, they are giving the channel that is pre-allocated to the cells, and you cannot change it. It will change, but some according to some situation, some hardcore situation. There are following aspects inside this fixed channel assignment, and one aspect is once the once uh, once the channels are being allocated to the cell, a new frequency or a new channel cannot be allocated to that particular cell. So what I mean to say is, it means, let's say I have 3 cells here in this manner and they are performing a cluster. So let's say this is first cell, this is another cell, and there is, I'm sorry, apologies for that, and there is another cell. So there are 3 cells like in this manner. Now what will happen is they have different frequencies, right? So if this cell is specifically working on 60 kilohertz for an example, this cell is working on some around 55 kilohertz, and this is like around working on 50 kilohertz. They are very nearby frequencies. Now what will happen is the person who is working, the person who is here in this region, whatever the people there are in this cell, they are going to work with the 60 kilohertz.
the people who are working here or situated here, they are working with 55 kilohertz, and these people are fixed and they are working with 50 kilohertz. Now the idea here is, if a new call comes up or if a new user comes up in any of these cells, it is not provided. Okay, it is not allocated, or it is not going to be allowed here to be there in the cell. It is not possible. So that's why any new call attempts in a cell, after all channels of that cell become occupied, new user is going to be blocked. What do you mean by that is, if let's say there are three people, 1, 2 and 3. Okay, so if these three people are using this 50 kilohertz, 50 kilohertz, 50 kilohertz, then it is completely occupied. Okay, this 50 kilohertz is completely occupied. There is no space for a new user to come up here and use this 50 kilohertz. This is going to be blocked. This is not possible for any of these cells. All right, so the idea is of fixed channel is like that, and it is very simple and requires least processing power. Why least processing power? Because it doesn't need to do anything here. Okay, no much more mathematic calculation, because जो दिया है आप उसी में ही वर्क करो. न्यू थिंग्स यहाँ पे कोई ऐड हो ही नहीं पा रही है. ओके, आप ना इसमें चैनल ऐड कर सकते हो दूसरे, ना ही न्यू यूजर यूज कर सकते हो. राइट, सो इसके अंदर कोई मैथमेटिक कैलकुलेशंस नहीं. What is the biggest problem of fixed channel assignment is that it cannot handle new user. नया यूजर इसमें नहीं आ सकता. Now अब ऐसा हो नहीं सकता कि नया यूजर ना आए, क्योंकि नया यूजर अगर ना आए तो कंपनी बंद हो जाएगी, क्योंकि कंपनी चाहती है कि मेरा अपना बिजनेस जो है वो बढ़े, और बढ़ाने के लिए आपको नए यूजर को ऐड करना पड़ेगा. So they can resolve this process with the help of something called as borrowing process. And borrowing process क्या होती है? Borrowing process ये होती है कि suppose these three peoples are working on 50 kilohertz. Okay, inside this cell, let's suppose there are only three people and they are using 50 kilohertz. Now if suppose a new user comes up, then this cell will say, I cannot give you any channel here because my channel is completely been occupied by these three people. But you can wait for some time and let me ask to my adjacent channels or adjacent cells. Let me ask them if there is if there is a channel completely free, then I can take that channel in my cell and then I can allocate to you. Are you getting it? अगर इसके पास 50 किलोहर्ट्ज के अंदर like this, ये सारे यूजर्स हैं आपके, ये सारे 55 किलोहर्ट्ज पे रन करने वाले यूजर है. सो दिस इज लेट्स से इस सेल के अंदर ये पूरी ऑक्यूपाइड है, ये भी पूरी ऑक्यूपाइड है, ये भी पूरी ऑक्यूपाइड है, बट देयर इज one specific channel that is completely free. Then this cell is going to allocate this specific channel to this cell, और जब यहाँ आ जाएगी तो फिर ये यूजर को प्रोवाइड कर देगा चैनल. लाइकवाइज, सो दिस इज नोन एज बोरोविंग प्रोसेस. And borrowing process can be done by the help of MSC, which is Mobile Switching Center, which is nothing but a big office of any mobile network. So here MSC does so many things actually, and you already know that. But specifically for the cellular network, what it does, it monitor the process and give permission to the borrowing cells. So BSC, BTS, ये सारी जो एंटिटीज हैं, ये आपका बोरोइंग प्रोसेस नहीं करती है, ओनली MSC कर सकता है. सो MSC is going to look after it. It will give the permission to the adjacent cell to go for the borrowing process. But borrowing process also maintain two requirements. One is, जब आप ये चीज यहाँ पर कर रहे हो, यहाँ पर सपोज एक ही आपके पास चैनल है जो कि फ्री है, और वो एक चैनल फ्री वो भी आप सेल नंबर 3 को दे देते हो, तो फिर ये जो पूरा सेल है ये वापस अगेन सेम सिचुएशन में आ जाएगा. ओके, ये भी पूरा ऑक्यूपाइड हो जाएगा क्योंकि आपने सब तो दे दिया है. अब इस सेल के पास कोई चैनल फ्री नहीं बचा हुआ. देन इस सेल को भी इस सेल से मांगना पड़ेगा कि आपके पास अगर कोई फ्री चैनल हो तो मुझे प्लीज दो. सो in general your cellular network says that do not do this.
If you have maximum frequency free in your cell, then you allocate like this. 1, 2, 3, 4 channels are completely free. You allocate 2 channels to here and 2 channels to here, no issue. But if you have completely occupied these 1, 2, 3, 4, then if only one channel is free, ये यहाँ पर देकर खराब ना करो अपना channel assignment. Okay, so this is the problem. And one more problem is the interference. When you are allocating these channels to the adjacent channels, then adjacent cells, then you should worry, you should have to worry about your interference problem. So interference ना हो जाए, ये आपको ध्यान रखने का है. So आपको ऐसे channels ही लेने हैं जिसकी frequency same ना हो, right? So do you have any problem in fixed channel assignment strategy? Okay. Okay, so after the fixed channel, we have, in contrast to fixed, we have a dynamic channel, and which is a more efficient way of doing assignments. Well, basically, when we say dynamic, you can understand that it is runtime, and it needs more mathematic power and mathematic calculations. So when it does mathematics, then definitely processing power isko zyada chahiye. So it is a little bit computational and complex. So फिक्स्ड में आपका चैनल जो था वो प्री एलोकेटेड होते था, लेकिन यहाँ डायनेमिक के अंदर चैनल्स आर नॉट प्री एलोकेटेड. सो रन टाइम यू कैन चेंज. So any channel can be allocated to any desired cell during the operation of the system, or if any cell is asking for the channel. मतलब कि आप रन टाइम पे भी सेल को बोरो कर सकते हो, या कभी भी कोई सेल आपसे मांगता है चैनल, तब आप उसे दे सकते हो, जिसके पास भी फ्री चैनल्स अवेलेबल हैं. फॉलोइंग आर द एस्पेक्ट्स. अगेन द सेम थिंग, आपका एमएससी जो है वो मॉनिटर करेगा सारे सेल्स को और सारे चैनल्स को. ईच हाँ, each time a cell request made, MSC assigns the channel to the base station. ये बोरोविंग प्रोसेस है आपका. कोई भी अगर सेल रिक्वेस्ट करता है किसी चैनल फ्रीली अवेलेबल चैनल के लिए, तो आपका एमएससी उसे असाइन करेगा. इसके बाद सम प्रोसेसिंग एल्गोरिथम्स भी हैं, जैसे कि ब्लॉकिंग इन द सेल, देन फ्रीक्वेंसी बीइंग यूज्ड इन द सेल, एंड द रीयूज डिस्टेंस. ये सारे काम आपका एमएससी करता है. See, it does this mathematics here. मैथमेटिक्स इस तरीके से कि ये आपको चैनल तभी देगा जब आपकी फ्रीक्वेंसीज सेम ना हो. इफ योर फ्रीक्वेंसीज आर सेम, देन देयर इज गोइंग टू बी एन इंटरफेरेंस नोन एज को चैनल इंटरफेरेंस. अगर आपकी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, देन ये आपको अलाउ करेगा कि आप चैनल को ले सकते हो. सो यू कैन सी हियर दैट इट इज रिटन प्रिसाइजली, assigns a channel only if it is not used and if it will not cause co-channel interference. Co-channel interference मतलब कि suppose that there are two people talking with each other like this. If there is one entity here and there is another entity here, uh, this is talking with him and this person is talking to her like this, and in between the talk there is some other frequencies come up, so like this. So this, some other frequency come up, and this person will listen to voices now from her, and there is another person who is sitting in the line. So this person is going to listen to voices. Okay, and this is basically known as co-channel interference, CCI. दिस इज को चैनल इंटरफेरेंस. सो ये चीज ना हो, इसका आपका एमएससी ध्यान रखता है यहाँ पर. So MSc processing algorithm provides higher capacity. That doesn't make any, I mean, big difference because it is okay. See, as I told you that it requires high computational power because ये सारी चीजों का ये ध्यान रखता है
और इन सब चीजों का ध्यान रखने के लिए उसको मैथमेटिक्स यानी कि कंप्यूटेशन बहुत करना पड़ता है। उसको देखना पड़ेगा हर सेल के अंदर जाके कि एक तो सेल में कितनी चैनल्स हैं, कितने यूजर्स हैं, उस चैनल के अंदर कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज हो रखी है। अब अगर कोई बोरो करता है इन चैनल्स को, तो उन दोनों की सेम फ्रीक्वेंसी हो रही है कि नहीं हो रही, इंटरफेरेंस जनरेट होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीजें आपका ये एमएससी ध्यान रखता है। सो डायनेमिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। See, as I told you, it collects real-time data of a channel, traffic distribution, and RSSI, which means the radio signal strength indicator, which means the signal level, or you can say the speed. So this is your second assignment strategy. There is one more strategy known as a handoff strategy, but now this is like optional. In some class, maybe in TC2 or TC3 or TD1 whatsoever, they have done this handoff strategy. They have done or not, I do not know, but this is also very important. Actually you already know what is this hand of strategy, क्योंकि अब हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपका यूजर आपसे मांगेगा, मतलब सेल का यूजर, ये वाला सेल का यूजर किसी और सेल के यूजर से फ्रीक्वेंसी मांगेगा, ये ऐसा हमेशा नहीं होगा। there is a property known as handoff which you had done in your third subject, sorry, third chapter, which says कि हमेशा चैनल असाइनमेंट स्ट्रैटेजी डायनेमिक या फिक्स्ड नहीं हो सकती। कभी 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 उसकी असाइनमेंट स्ट्रैटेजी की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब सिचुएशन ही ऐसी हो जाती है कि मुझे चैनल को असाइन करना ही पड़ेगा, उसके सिवाय कोई और चांस है ही नहीं। सो ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब आप अपने एरिया से निकलकर किसी और एरिया के अंदर शिफ्ट होते हो। सो लाइक दिस। So if this cell is working on, let's say, some channel with a having frequency of 40 kilohertz, and then this is a different cell having a channel of 50 kilohertz having a frequency of 50 kilohertz. So अगर आप यहाँ कहीं लहरा रहे हो, and then certainly अगर आप मूव में हो, डेफिनेटली अगर आप घूम रहे हो, तो आप किसी और सेल में चले गए, ये आपको नजर नहीं आता, लेकिन आप चले गए होते हो। तो अगर आप किसी और यहाँ पर हो, किसी और सेल में हो, तो डेफिनेटली इस सिचुएशन में ये ऑटोमेटिक आपकी आपकी चैनल असाइन हो रही है। आर यू गेटिंग इट? हैंड ऑफ आपका ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो यहाँ पर ना फिक्स्ड काम कर रहा है, ना डायनेमिक कर रहा है, ना ही कोई बोरोविंग प्रोसेस हो रही है। आप ऑटोमेटिकली मूव कर रहे हो एक सेल से दूसरे सेल में, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन आपका एमएससी को ये समझ में आ जाता है कि भाई यूजर मूव हो चुका है, एंड आई नीड टू शिफ्ट दी फ्रीक्वेंसीज एज वेल। 40 to 50 I need to do that, because अगर वो यहाँ पर है तो इसके साथ तो काम कर ही नहीं सकता, it needs to be on another zone. I have to give the channels like 50 kilohertz to use these services, otherwise he will not use any kind of services, right? So this is another kind of strategy known as handover or handoff strategy. So ये भी आप लिख सकते हो, and it's going to be, it will give you full marks there, right? So this is your assignment strategy. Now do you have any problem in these three strategies? Okay, okay, that's good. Now what about come on. One question is, how many, if you are left with your assignment 2, uh, assignment 2 किसी का बाकी है? See, I'm not giving you any kind of punishment. You can just speak up, sir. Mine is left, and I'll do it. I just want a count. I mean, just let me know if your assignment is not done.
Is done, na? Sorry, but if you will speak, I will not listen because I have headphone. This headphone is like only have a single jack. I can only, it is having only output. I mean, I can speak, but I cannot listen your voice. So you need to write in the comment section. So if you are speaking, then please don't speak. You will write in the comment. I have uploaded. Okay. Any the students who have not uploaded, I want that count. Those who have uploaded, I appreciate your cooperation and thank you so much for that. But the people who have not uploaded, I want that count. And yes, I think the NetKid, the Cisco, I think many of you have not yet completed, but the date is gone. I mean, 20th October is the last date for that Cisco. I mean, many people have not yet done, I guess, the certification, for certificate. But let me ask the other faculties what their count is on Cisco. They have completed it or not. I need to ask them. If not, then I'm gonna rearrange the dates, and then please you complete within that time. Uh, I need to see what. Sir, I have completed the quiz exam, but forget to complete course feedback due to that I'm not able to generate certificate. Yeah, no issue. The certificate is going to be handled by me only, so do not worry about it. If your quizzes are complete, then certificate is not an issue. I'll see whosoever have completed the quiz. Uh, I'll check that out and I will generate the certificate. So no issue for that. But if you have not done anything, then it is somehow impossible for me to generate that certificate. So I'll see that. Let me see for assignment, how many of you have provided. I have around 38 students and your class is having 59 of strength. So still there are many students who have not completed. So it is like a very big difference. Still, I think 20 or 21 students who have not yet uploaded the assignment. I do not know about the assignment one because I didn't check that assignment one. I hope assignment one has been completed by everyone. So how many of you have, who is this Nirav Cable? I want to talk with this. Do you have any person whose name is Dave? Uh, who is this? Dave? Do you have any student named Dave Kevalia?
Uh, I mean, I do not understand what is the problem with these students. छोटा मोटा मस्ती ठीक है पर एक्चुअली जितना लिबरल रहता है ना उतना ज्यादा प्रॉब्लम होता है मेरे को. Wow. He is a good student, but see what he did. I mean, you can see that, right? He had sent me the maths homework. Simple past tense. साथे भूतकाल. Affirmative sentences. I saw a man की yesterday. जो लिखा है वो भी गलत है. The thief was caught by the policeman. The policeman caught the thief. Now, I mean, कहाँ से आते हैं लोग? What should I do? I need to talk with him. I hope किसी और ने ऐसा नहीं किया है. ये प्रतीक भाई ने भी यही कुछ कर दिया है. प्रतीक ने मुझे जारो का एप्लीकेशन फॉर्म भेजा है. टेल मी व्हाट शुड आई डू विद देम. No, Pratik, I think that is a mistake, I guess. No issue. I think the main assignment is okay. So I hope इसमें भी बहुत सारे लोगों का बाकी है. बिकॉज प्रतीक की कितने असाइनमेंट्स हैं यहाँ पर. प्रतीक ने पूरा मुझे भेज ही दिया लगता है. इसमें भी कई लोगों का बाकी है. आई नीड टू bifurcate and I will give you the count, and whosoever is left with their assignment one, I'll mail to them by today only. Please complete your assignments. One and two both are left. इतना तो लोड दिया भी नहीं मैं. नो इशू. Okay, so while completing, I think GSM chapter is in the drive. So uh, okay, so we have the third chapter. और ये जो थर्ड चैप्टर है, ट्रस्ट मी, आपका जो मिड टू सिलेबस है वो हम थर्ड चैप्टर से कंसिडर कर रहे हैं. सो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन,
So this is basically the syllabus of your mid 2 exam. 3, 4, 5, 6 and 7. 7 chapters. 7 chapter तक. आपका 8th chapter we are not including 4G. So remember the syllabus. I will today in your telegram also text the syllabus and all. I mean, what about the mobile computing result? I mean, I didn't ask to anyone. I hope everyone is pass and have a good grace. I do not know. Okay, sir, syllabus is too much. But syllabus is too much. But this is the last mid, so we have to take every chapter. Yeah, average is there, but it is there in every class. I mean, now for one class I cannot change, ना. अगर मैं अपनी क्लास का बोलूं कि change करना, so please keep syllabus. See what will happen, Haley. Trust me, the syllabus is okay. I mean, it's vast and big. I understand, but the question is very general, and it is like if you एक बार अगर आप ऐसे सिर्फ एक नजर मार लोगे नोटपैड में, तो भी आपको आराम से उसका आंसर या मिल जाएगा. That is not that hard. कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत डीप पढ़ना पड़ेगा. सिर्फ आप एक बार नजर मारोगे तो भी आपको आइडिया आ जाएगा. और अभी मैं this is not decided by me, this is decided by the exam committee. What how many percentage you need to keep in mid 2, so that's why. और सभी क्लास में यही है. I cannot change for one specific class. But we read notes and some questions were out of reach in mid 1 from 3rd chapter only. Now from 5th chapter, no idea how would be exam. Okay. I need to ask other faculties in TC2, TC3 and TD1. I'll let you know what they are saying, okay? From my end, I do not know uh, how I can approach with this, but I'll ask if possible, then syllabus decrease will benefit all class. I'll ask to them, okay, and let you know in the telegram what they are saying. No issue. Okay. Now we are in chapter 3, and in chapter 3 there are certain terms and there are certain short forms. So जैसे कि अगर RSS है, then we need to I mean mug up what is RSS, what is NSS. You need to remember the full forms of it, so because that can be asked in your exam. So understand the architecture, because architecture के ऊपर बहुत ज़्यादा questions आते हैं. Architecture के अंदर से ही बहुत ज़्यादा questions आएंगे. So there are 3 sections in your GSM architecture. One is basically known as radio subsystem. Another one is a network and switching system, and another one is operating subsystem. अब ये तीनों sections के अंदर अलग अलग components हैं. तो अगर हम रेडियो सब सिस्टम की बात करें तो उसके अंदर 2 चीजें आती हैं. पहले मोबाइल स्टेशन एंड बेस स्टेशन कंट्रोलर. सबसे पहले ये आता है मोबाइल स्टेशन एंड बेस स्टेशन कंट्रोलर. नाउ I hope that you understand by the meaning of mobile station. Mobile station is nothing but your mobile equipment. That means your device. Samsung और कौन सा है ये, और कौन सी कंपनी आती है मोबाइल में, अरे ये Realme एंड ऑल, जो भी आपके फोन है वो आपके मोबाइल स्टेशन कहलाए जाते हैं.
एंड मोबाइल इक्विपमेंट के अंदर आपका आता है सिम कार्ड, विच इज योर सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। अब इक्विपमेंट के अंदर ढेर सारी अलग अलग चीजें होती हैं, जैसे कि कैमरा, ब्लूटूथ, सेंसर्स एंड डिफरेंट अदर थिंग्स, ये PCMCI, ये कार्ड, ये सारी चीजें, इससे आपका एक इक्विपमेंट बनता है। और उसमें आपको एक स्पेसिफिक स्लॉट दिया जाता है फॉर अ सब्सक्राइबर, आई मीन आइडेंटिटी मॉड्यूल के लिए, जिसके थ्रू आप नेटवर्क ऑपरेटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। तो अब ये दोनों चीजों के लिए, यानी कि आपके मोबाइल इक्विपमेंट और सिम कार्ड के लिए दो दो अलग अलग नंबर दिए हुए हैं। उन दोनों का नाम है IMEI नंबर और IMSI नंबर। अब IMEI क्या है? I stands for International Mobile Equipment Identity. Okay, and if I go for SIM card, we have a number known as International Mobile Subscriber Identity. These are the two numbers which uniquely identify each things. अगर IMEI की बात करूं तो ये आपका यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा मोबाइल इक्विपमेंट को। अगर मैं IMSI की बात करूं तो ये यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा सिम कार्ड को। अब इसके बाद हम आ जाते हैं BTS के अंदर। अब ये जो BTS है ये BSC के अंदर आता है, और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका यहाँ पर जब एक BSC होता है, दिस इज लेट्स से दिस इज योर BSC, तो ये एक BSC कई सारे BTS को हैंडल करता है, मे बी 3 और मे बी 4। और आपका जो BTS है वो कुछ नहीं बट एक एक्सेस पॉइंट है, लाइक दिस। इसको हम बोलते हैं पूरा का पूरा, मतलब इन जनरल BSS एक्चुअली। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये BSC के अंदर आता है। सो अगर हम BTS की बात करें तो ये एक किस्म का ट्रांसीवर सिस्टम है। एंड ट्रांसीवर बाय द मीनिंग ऑफ इट कैन ट्रांसमिट समथिंग एंड इट कैन रिसीव समथिंग एज वेल। ये दोनों चीजें कर सकता है। देन दिस इज ओके, आई मीन ये रेडियो लिंक से बात करता है। हाँ, then they have two types of antennas in BTS. We could have an omnidirectional antenna and we could have unidirectional antenna. Now, omnidirectional antenna means it's scattered everywhere. So if I have an like omnidirectional antenna, तो ये एंटीना जो होगी वो हर जगह अपना डेटा को ट्रांसफर करेगी, चारों दिशा। This is like omnidirectional antenna, right? And when I say a very directional antenna, then directional antennas are maybe Yagi antennas, and then looks like this, and which is very very indirect. Okay, ये एक दिशा में ही आपका डेटा को ट्रांसमिट करती है। सो ये दोनों दोनों टाइप के आपके BTS हो सकते हैं, उसके अंदर एंटीनास हो सकते हैं। मेजर फंक्शन क्या है बेसिकली, कि ट्रांसमिट करना और डिजायर्ड जगह पर उसको ले जाना विद प्रॉपर फॉर्मेट। और उसके ऊपर आता है आपका BSC। अब ये जो BSC है ये ढेर सारे BTS को हैंडल करता है और कंट्रोल करता है। कभी कभी ये कभी कभी क्या, हमेशा ये हैंडओवर के काम में भी आता है। हैंडओवर के काम में इसलिए क्योंकि अ, आपका जो मोबाइल स्टेशन होगा, वो एक मोबाइल स्टेशन यहाँ है, तो कभी ये इसके साथ कनेक्ट होगा और कभी ये इसके साथ कनेक्ट होगा बिकॉज ऑफ द मूविंग मूवमेंट, और कभी ये इस एंटीना के साथ कनेक्ट होगा। तो ये जो बार बार आप हैंड ऑफ कर रहे हो यहाँ पर, ये हैंड ऑफ आपका BSC भी कभी कभी हैंडल करता है। इट विल समटाइम डू दैट। So handles the switch over of a mobile user from one BTS to another BTS during roaming and handoff. And this is okay, I mean they are just written as it controls the transmitted power, कितना पावर से आपको भेजने का है ना। अभी इसी चीज के अंदर हमारे पास एक एक कंपोनेंट आता है जिसे हम आर्किटेक्चर में लेते नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमने लिया है, जिसका नाम है TRAU। एंड TRAU जो है वो है ट्रांसकोडिंग रेट एडेप्टेशन यूनिट। और इसका काम बेसिकली क्या है, ये आपके बिट रेट को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? इट्स अ सिंपल थिंग। if I have a mobile station like this, I have a BTS like this, and then ESC like this, and then there is a, let me see,
This is mobile station base transceiver system. Yes. There are these type of thing is being provided. Now what will happen is, जो आप बात करते हो मोबाइल स्टेशन, जब आप आपका हेलो जब सेंड करेगा यहाँ पर दूसरे एंड की तरफ, तो ये जनरली 16 kbps के अंदर होता है, 16 भी नहीं पर 13 kbps के अराउंड कुछ होता है। ये 16 kbps आपके यहाँ आगे बढ़ेंगे और बीएससी फिर वापस 16 kbps को क्या करेगा, या एमएससी के पास भेज देगा। अब ये 16 kbps है, इट्स अ वेरी स्मॉल आई मीन बिट रेट, जिसे आपका रिसीवर में भी समझ पाए ना समझ पाए, यहाँ लॉस्ट हो जाए, ये दिक्कत है, राइट। सो हमारे पास एक और कंपोनेंट है बीएससी और एमएससी के बीच में, जिसे हम बोलते हैं TRAU, और ये आपका वो कंपोनेंट है। अब ये TRAU क्या करता है बेसिकली, it will increase the bit rate of 16 kbps, here it is 16, to something called as 64 kbps, okay, which is somehow larger than this, and then I can send from this MSC to the other MSC, okay? This is the other MSC of a receiver. So ये आपका यहाँ पर receiver है, this is another MSC, receiver MSC, और ये 64 kbps यहाँ पर इस साइड पे जाएगा, फिर आप हेलो हेलो पे बात कर सकते हो। तो 16 kbps is very small, और ये आपका रेट एडेप्टेशन है, मतलब इनकोडिंग लगाकर ये 64 कन्वर्ट कर देता है, दिस इज इनकोडिंग। So this is rate adaptation unit. All right, so the next thing we're gonna see in the next lectures, and let me take the attendance and all. Oh, 1667 part 1, 6, 8, 9, 9 is not here. Yes. 12. Okay, okay. 17, 18, 19, 26, 33, 34, 37, Yes, sir. 41, 45, 48, 49, 60, 62, 63, 66, 67, 69, 72, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 82, 85, 86, 87, 91, 100, 107, 108, 112, 113, 114, 119, 120, 121, 124, 124 है, 126, 127, 129, 130,
134 Sir, 80. जस्ट अ सेकेंड, मैं कर दूंगा, डू नॉट वरी. 134, 135, 136, 145. You present, Ronak, already present. 164, Sir, 112 is present. 112, okay. 164, 190, 05, 18 series, Mehul. 010, Mohit. 016, Sagar. 01 is present, right? Now tell me who is present. Sir, 48. 48. You are present already. Umesh. Anyone else? 76, sir. 76. Nal, okay, done. Whosoever is friend of this Raj Kumar and I think Dev, please tell him that why they are not regularly coming. I think Fenil is also one of them. And whosoever is constantly absent from the lab lectures, I mean, I understand there might be some problem on one day, but do not repeat it on the second day, right? At least lab lectures जिसके चल रहे हैं उनके attend करो. कई लोगों की कंप्लेन आ रही है कि कोई आता ही नहीं है, 2 स्टूडेंट ही होते हैं. अभी अभी इस वीक में थोड़ा इशू होगा क्योंकि आपकी टीसीएस एनक्यूटी का बहुत सारा चल रहा है. सो आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस वीक, बट नेक्स्ट वीक ऐसा मत करना, ऑलराइट? जितना है उतना अटेंड करना. Okay guys, so thank you so much and I'll see you in the next session.